Students, welcome to today's class. Good morning ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ. So in the previous class we were learning about different feeding and eating habit of animal and we are reading the part different ways of eating of animal. We have discussed chewing the cud, swallowing, tearing and then chewing, sucking and gnawing. So today we will be reading some other ways of eating. पिला माने आउ किछिटा खायार किछिटा वे अछि जेमति कि the trunk of an elephant help it to suck up water, uproot the grass and tear off branches from the tree. It also use its trunk to have shower. तो पिला माने से को कहला देखि जो पिले एलिफेंट रो जो ट्रंक बा सुंदरटा थाए सेटा कोन करे ना सेटा को पानी से सुंदर से बहुत पानी शोषी पारे एवं ताकू नै कि से पी भी पारे तो सेही सुंदर से ब्रांचेस भांगी पारे छोट छोट गच्छ मध्ये उपाडी खाई पारे तो सेटा कोटे तार माने वे ऑफ ईटिंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रंक ऑफ द एलिफेंट तो टू हैव ए शावर पिला माने शावर माने कोन से सेतरे गाधाय मध्ये माने एमती से आनी कि पानीटा त सुंदर शोषे एवं निज ऊपर जने छाटे हला तो से भी ताकू माने यूज करे ट्रंक को गाधाय पानी an earthworm dig the soil and turn it upside down in search of bits of dead plants and animals as its food पिला माने देखिथिबो जिया कोन करे ना जिया माटी रहे तो जिया कोन करे ना सॉइल को खोले माने कोन करे ना सिए माटी की माने खोली दिए तेनु ताकू भी कुआ जाए earthworms are called the farmer's friend बा कृषकर चासी जिया को मध्ये कुआ जाए काहे कि ना जिया जते बेले माटी की खोली जाए माटीटा पूरा बहुत हल्का हो जाए एवं ता भीतर को इजीली ऑक्सीजन पास करे जो जहा फल रे कि माटी को आमे उर्वर माटी बोली मध्ये कहू तो पिला माने तार सेमती वे ऑफ ईटिंग सेटा से खोली की ता भीतरु डेड प्लांट्स और डेड प्लांट पार्ट एवं डिफरेंट जिंस खोजी से खाए ठीक अछि तो सम एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स लैप मिल्क और वाटर विथ देयर टंग lizards and frogs have long and sticky tongues to catch the prey पिला माने कैट डॉग देखथिबो सेमान जदि तुम गोटे क्षीर दबो गोटे जगह रे से तो जीवरे चटचट करी चाटी खाइबो तो ताकू लिकिंग बोली कुआ जाय से जो थिंगटा को लिकिंग बोली कुआ जाय तो सेमान सेमति खांती एवं lizards and frogs have long and sticky tongues to catch their prey lizards माने पिला माने देखथिबो झिटिपिटी हो एंडुओ हो हला किबा बेंगो हो ताकर गोटे लंबा जीभ थाए माने एमती ताकर स्टिकी टंग ताकर जीभर गोटे अठाळा जिंद थाए जहा फल से छोट छोट इंसेक्ट मानकू माने स्टिक करकी बा जीभ काढी बाहर को ताको अठाळा को कैच कर देबे कैच करकी ताको आनी रिटर्न आउथरे खाइबे तो ताको सेटा वे ऑफ ईटिंग तो पिला माने देखो मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी नोइंग द टीथ you know very well it is squirrel grinding teeth you have to find it and the rest very easy you have to find these things and you have to do when I will ask to give the answer you will give the answer if you don't know then I will discuss with you so pila mane next on dela na domestic animal need care so domestic animal need care why do domestic animal need care ase lekhila animals like that is we will first write the topic domestic animal need care so कौन कहला ना animals like cow oxen camels dogs etc will serve us by doing what for us are called domestic animals we should take care of them and look after them देखो कहला ना animal like cow oxen camels पिले cow माने गाई ox माने बळद camel माने ओट dogs ए सब कोन करंती ना ये हमको सर्व करंती पिले सर्व माने कोन ना ये हमर सेवा करंती केमिति करंती तुम जानिचो गाई हमको क्षीर दिए बळद हमको हळ करिवार सहायता करे camel तो कहतिली हमको राजस्थान डेजर्ट रे हमको हेल्प करे कोटे जगह को जिबा पई एवं डॉग कोन करे ना डॉग हम घर जगी रुहे तेनो एमा सब हमको जेमिति हेल्प करंती वी शुड आल्सो टेक केयर आफ्टर देम सो काउ को हमें केमिति टेक केयर करबा we should always be kind to domestic animals तो सब हम को करबा ना हमें domestic animal मानन को सब बळे केयर करबा दरकार we should give them healthy foods and water at proper time and clean the vessels हमें ताको सब बळे हेल्दी फूड दबा वाटर भी दबा एवं जो वेसल्स बा जो जागर ताको हमें खाया दोचे से गुडा को हमको नीट एंड क्लीन रखिया को पड़िबो हमें जेमति सफा सुतुरा जागर खाउचे से मानको को मध्ये हमें सेमिति सफा सुतुरा जागर खाया को दबा कथा वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन से माने जोटी रहउछन्ती पिले देखिथिबो तम रूम जेमति सफा अछि जेमति मार्बल पड़छि टाइल्स पड़छि फैन लाइट सब लागिछि से माने जोटी रहउछन्ती से को सेठी की मध्ये सेमिति सफा सुतुरा करिके क्लीन करी रखिबो ठीक अछि
प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स जेते बेले एनिमल्स मानु किछि रोग हो जेमति हमको रोग होला हम डॉक्टर पाकु जाउते मेडिसिन खाउते मेडिसिन दुकान जाउते सेमिति जदि एनिमल्स मानु भी रोग होउची आमे तांकु सेमिति तकर अछंती हमर जेमति ह्यूमन डॉक्टर ताकर सेमति हेले वेटनरी डॉक्टर तो आमे वेटनरी डॉक्टर पाकु नेकी तांकर प्रॉपर ट्रीटमेंट करबा दरकार ठीक अछि तो पिले देखा बे एफटीडब्ल्यू फैक्ट्स टू नो एनिमल्स व्हिच कैरी लोड्स फॉर अस आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन and it is like our horses also carry donkey also carry तो ताको beast of burden बोली कुआ जे पिला में देखो तापर ग्लोसरी जे किछि अछि डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जेमति च्यू माने to grind between teeth energy the strength or power to do work flesh है the soft part of animal's body habits है regular ways of behaving माने तुम नित्य दिनिया व्यवहार या फेला taking liquid off by tongues जिभरे जेमति तमे लिक्विड टाको ऑफ करा दरकार ताको लैपिंग बोली मध्य कुआ जाय शावर माने हला स्प्रेइंग वाटर ओवर बॉडी बा काटिया ठीक अछि तो पहले माने समरी हम आज कोन पढिले ना एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश are known as the carnivorous animal. Cats and dogs lap milk or water with their tongues. Butterfly bee etc. suck their food with sucking tubes. Animals like cow, buffalo and goats chew the cuds. Elephant has a very sensitive trunk. It has 40,000 muscles and flexible like a rubber. Lizards and frogs have long and sticky tongues to catch their prey. We should always be kind to domestic animals. So my dear students, next we will move to the exercise part of the topic. Then answer the following question. What do you mean by chewing the cud? You know very well. When animals swallow the food, then with the leisure time, or when they are sitting or sleeping, then again they retake their cuds, the foods to the mouth, and they chew it, and they again swallow. It is called the cutting. Next is what do you mean by what do herbivorous animal eat? You know they eat plants and plants part. Then how many types of eating habits do animal have? Name them. You can do it. What kind of teeth do grass eating animals have? You can write it very well. I hope. Then fill in the blanks with the correct words. The dash sucks the blood of animal. It is your mosquito. Then you have to do the rest question by your own. It is very easy. If you will not do, then I will discuss with you. Then give one word for of the following animals that only eat plants are known as herbivorous. You know you have to do the rest part. I know you will do it very well. Then answer the following question in short. What do carnivorous eat? You know carnivorous eat flesh and meat of other animals. It is again divided into scavengers who eat the dead part or the dead animals for their food, and rest you can do it. I hope. Then multiple choice question or MCQ. Which series of animal is a herbivorous? प्ले सीरीज माने कोन तुमको तीन चारटा दिया तो तुमे ताको देखिबो जे को तीन चारटा ठीक अछि प्ले herbivorous कोन हबो लास्ट को आसो cow buffalo horse goat etc. known as the herbivorous, and I hope you can do the rest. Then horse, the higher order thinking skill. Why do all food chains start from plant? तो प्ले माने very nice question. Why do all food chain start from plant? You have already read about food chain. I have told you in chapter 2. So why it start from plant? Now plant is the ultimate source of energy for all of us. गच्छ हमर समस्तिकर एनर्जी रो एकमात्र स्रोत कारण पिले तुम कहिथिली सिंह को जदि बंचिबा को अछि सिंह का खाइबो हरिण खाइबो हरिण को जदि बंचिबा को अछि से कोन खाइबो ना से गच्छ खाइबो तो अल्टीमेटली गच्छ टू ही सब फूड चेन सेगमेंट स्टार्ट बिकॉज़ इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. Can you differentiate between domestic and pet animals? पिले domestic out pet या भीतर डिफरेंस कोन तमे को भलो भाबे देखियो पिले domestic animal कोन domestic animal are those animals which are used for domestic purpose like cow horse donkey से माने को हम निज domestic काम रे लगाउचे किंतु pet माने कोन जाका हमें पाळुचे जेमिति बिलेई कुकुर एमान को डोमेस्टिक नो एमान पेट एनिमल्स को आजिबो जाका हमें पाळुचे एवं जो माने हमर कोनसी डोमेस्टिक यूज रे काम रे आसु नाहंती तो पहले हमें तापर कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. You can do it. Type of animal herbivorous, carnivorous and omnivorous. तो पहले मैंने B C D is very easy. Act as an elephant. Show your friends how elephant get food from teeth. Spread your arm. And if it is an elephant trunk, then pretend plucking a leafy branch from a small tree. The next is make cards
paste various type of animal on one side, write their behavior. On the reverse side, you can also play a game with the cards, giving clues to your friend, give him or her a point if she gains successfully. So these are the activity part. Actually BCD एटा तुम्हारा activity जोड़ा कि मु तुम्हारा केबे ना केबे टाइम काढी करेबी. So my dear students, it is the end of your chapter, that is feeding and eating habit of animals. I hope you have enjoyed a lot. We will meet in the next class. Till then, take care of yourselves and bye bye.